तो वी वर स्टडिंग अबाउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो उसके ऊपर और रिजल्ट्स हम लोग लिख लेते हैं। तो लेट्स राइट सम मोर रिजल्ट्स। तो फर्स्ट, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस सम रिजल्ट ऑन द इक्विवेलेंट फॉर्म। है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास अगर हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो उससे हम क्या क्या चीजें रैंक के बारे में कैसे बता सकते हैं। है ना, और कैसे हम देख सकते हैं कि जो रो रैंक है एंड कॉलम रैंक विल बी सेम। ओके, तो लेट्स राइट मोर रिजल्ट्स। तो now we are going to write the results on the डिपेंडेंसी ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। है ना, हमारे पास रोज और कॉलम्स कब डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, सो वी कैन हैव दिस रिजल्ट्स, लाइक रिजल्ट्स ऑन डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑफ रोज, एक मिनट, dependency of rows and columns. Note down these results columns. सो इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, है ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर है, तो इट मींस उसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो है। डिटरमिनेंट जीरो है, इसका मतलब रैंक उसकी फुल रैंक नहीं है। फुल रैंक का मतलब उसके रैंक एन नहीं है, जो भी उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इफ रैंक इज लेस देन एन, or we can say matrix is singular, then definitely the column and rows, because जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज नहीं होंगी या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब डेफिनेटली द कॉलम्स विल बी डिपेंडेंट एंड रोज विल बी डिपेंडेंट। ओके, so write the first result in this way. I square matrix, I square matrix A is singular, is singular if and only if its columns, its columns or rows are linearly dependent, or linearly dependent. Okay, so a square matrix A is singular if and only its columns or rows are linearly dependent. Next है, if a matrix has more rows than columns, then rows are linearly dependent. Okay, so how we can see, ठीक है, if you have a matrix A which order is your m by n, and if the number of rows is more than the number of columns, ठीक है, so if you are just saying कि this m is greater than n, okay, then the rank of A होती है वो क्या होती है, दैट इज द दैट विल बी लेस और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ दिस m एंड n। अब मिनिमम क्या है, n है, तो इट मींस दिस रैंक ऑफ A इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू n, एंड विच इज लेस देन m, ऑलवेज नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब है रैंक ऑफ ए जो डिफाइंड होती है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज लेस देन एम इज ऑलवेज,
इसका मतलब है कि सारे रोज मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, एक डिपेंडेंट रोज कलेक्शन बना देंगे। ठीक है, तो इफ मैट्रिक्स हैज मोर रोज देन द कॉलम, देन डेफिनेटली द रैंक ऑफ the matrix will be less than the number of rows. So it means that the collection of all rows will be a dependent set. Then rows are linearly dependent. Okay. One thing, similarly for the columns you can say, ठीक है, अगर हमारे पास कॉलम्स मोर देन रोज है तो देन कॉलम्स will be differently the linearly dependent. Similarly you can write the result for the columns. So if a matrix, if a matrix has more columns than rows, then columns are linearly dependent. Linearly dependent. Okay. Okay. Next, results on nullity. So this is our results on nullity. ओके, तो नलिटी सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं, नलिटी क्या होता है। तो नलिटी बेसिकली द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की नल स्पेस होता है, तो उस नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है दैट इज कॉल्ड नलिटी ऑफ अ। तो डायमेंशन क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नल 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 स्पेस में जो पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन। उसके उसके अंदर वी हैव सम जनरेटिंग सेट एंड विच इज आल्सो linearly independent, that is called basis of that, and the number of elements in the basis is called the dimension of that space. Okay, so let's define the nullity first, then we write some results which is based on nullity. So if we know the nullity, then we can able to say something about the matrix. Okay, so nullity क्या होती है, nullity of a matrix, the dimension of the null space of matrix is called nullity. ठीक है, how we define the dimension if we there have a matrix, तो नल स्पेस की अगर बात करें तो वो डिफाइंड होता है द ऑल पॉइंट्स एक्स सच दैट दिस इज ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन ऑफ दिस यू कैन से लीनियर सिस्टम, यहाँ पर ए है तो ए से हमारे पास जितने भी ए लीनियर इक्वेशन बनती हैं, तो एक्स इक्वल्स टू 0 नल मैट्रिक्स, तो इन दैट केस द सोल्यूशन ऑल द x which satisfy this condition will get the null space. Okay, so the dimension of the null space of matrix is called a
नलिटी। तो डायमेंशन क्या होता है किसी भी स्पेस की? दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस। सो वी विल फाइंड सम जनरेटिंग element and which is also linearly independent, that is called basis. So number of element in the basis is called the dimension. Okay, so if we know the nullity of a matrix, you can say the dimension of a null space, then we have some results. So this very famous result hai, that is very important result also. Number one, that is called Sylvester's law या रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो इसको ओके, सो सिल्वेस्टर लॉ, इसको बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। तो रिमेंबर दिस थ्योरम एंड रिजल्ट कि सम ऑफ रैंक एंड नलिटी of a matrix is just equal to number of columns. Okay, so you can just write here sum of rank and nullity of a matrix is always equal to its number of columns. So if we have a matrix like this, Aij of order m by n, okay, then rank of A plus nullity of A, इसको हम Na से डिनोट कर सकते हैं, is just equal to n. N is the number of columns. Okay, so you just remember this result कि sum of rank and the nullity of a matrix is always equal to its number of columns. Second result, if rank is maximum, if rank is minimum, suppose that, then nullity will be maximum, क्योंकि दोनों का सम हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है ना। तो nullity is maximum and if rank is maximum, then nullity will be minimum. Okay, so we have a result if a matrix, ये तो हमें पता भी है रैंक के बारे में, if a matrix is m by n मैट्रिक्स, तो यू नो दैट कि हमारे पास m by n ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक है that will be always less or equal to the minimum of the नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इनमें से जो मिनिमम होगा उससे कम या इक्वल हो सकती है, एंड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। जीरो कब होती है? दैट इज ओनली फॉर द नल मैट्रिक्स, एंड अदरवाइज इट विल बी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर। ओके, so if you are talking about rank which is lies between 0 and minimum of m comma n, then you can also write some result which is based on the nullity.
if this is A is m by n, okay, matrix, then this nullity, will be so nullity of A। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम जो ऊपर पढ़े कि अगर नलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, तो हमारे पास जो रैंक है वो मिनिमम होगी, अगर रैंक हमारे पास मैक्सिमम है तो नलिटी मिनिमम होगी। ठीक है, तो उस केस में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वी कैन, जो मैक्सिमम हमारी नलिटी हो सकती है दैट इज योर एन इफ रैंक इज जीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या है, एन। तो यहाँ पर दिस नलिटी ऑफ ए will be less or equal to n, and it will be greater or equal to n minus minimum of this, जो भी वैल्यू होगी, दिस इज m कामा n। ठीक है, तो सही से लिख लेते हैं थोड़ा सा, दिस इज n माइनस है मिनिमम ऑफ m कामा n इज लेस और इक्वल टू nullity is of a is less or equal to n। okay, so this is uh, this is results on the nullity of a matrix, है ना। तो you can just remember these results, very very famous and important results। okay, अब हम रैंक के दो मैट्रिसेस के सम की रैंक क्या डिफाइंड होती है, प्रोडक्ट की रैंक कैसे डिफाइंड होती है, वो किससे कम या ज्यादा होती है, उसके ऊपर हम रिजल्ट्स लिखने जा रहे हैं। तो वी कैन जस्ट राइट टाइटल फॉर दिस रिजल्ट्स, दैट इज योर रिजल्ट्स ऑन, and you write these all results in separately, then you can able to remember together, है ना। जैसे ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स हैं, तो इनके रिजल्ट्स को आप याद करें बहुत मतलब सेपरेटली इस तरीके से, तो हिरार्की बन जाएगी कि हमारे पास ये रिजल्ट्स इस तरीके से फॉलो होते हैं। ठीक है, सो रिजल्ट्स ऑन सम्स एंड प्रोडक्ट्स। तो पहला रिजल्ट है सम, सम के ऊपर। ठीक है, तो सम रिजल्ट की दो मैट्रिसेस का सम है, तो उसके रैंक के बारे में हम क्या कह सकते हैं। So we have this taken here. Okay, so let A and B, let A and B, let A and B are two matrices. A and B are two matrices of same size. Same size होगा तभी we can able to add them, है ना। Matrices of same size is only conformable for addition. Okay, so if A and B are two matrices of same line, then addition is possible for that matrices. Then rank of the matrix A plus B is less or equal to rank of A plus rank of B. Okay, and it will be greater or equal to modulus of difference between the ranks. Okay, so rank of A plus B is always less or equal to rank of A plus rank of B, and it will be greater or equal to always with the modulus of the difference, है ना। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी के बीच का जो डिफरेंस है उसके मॉडुलस से हमेशा बड़ा रहेगा। एंड दिस इज रिजल्ट इज आल्सो होल्ड फॉर माइनस, तो वट एवर यू जस्ट टेक प्लस माइनस, दैट रिजल्ट इज होल्ड फॉर बोथ। ठीक है,
तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, एंड इट इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। नेक्स्ट रिजल्ट है जनरल प्रोडक्ट रिजल्ट, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट में हैं तो उनकी रैंक हमारे पास ए और बी से कैसे रिलेट करती है, क्या डिपेंडेंसी रखती है। तो दैट इज सेकेंड रिजल्ट इज हेयर। तो जनरल प्रोडक्ट रिजल्ट, general product result. So if I'm just taking A and B, two matrices, we have this is A and B are two matrices. So let what happened? Change नहीं हुआ. Okay. So let A and B are two matrices such that AB is defined. मतलब product of two matrices is defined. It means if A is of matrix M by n order, then B should be of order n by p. Okay, इसका मतलब number of columns in A should be equal to the number of rows in B. Then we can able to find the A into B. Okay, so then we have results. That is your rank of AB is less or equal to the minimum of rank of A comma rank of B. तो ये रिजल्ट होता है कि द रैंक ऑफ ए एंड बी तो रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में से जो मिनिमम होगा उससे भी रैंक ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू होगा, मतलब दैट विल बी। तो क्लियरली आप एक चीज यहां पर कह सकते हो, दैट रैंक ऑफ ए बी, whatever the rank of AB, that always will be less or equal to rank of A, and you can say the rank of AB is less or equal to rank of B. So rank of AB is always less or equal to rank of A, and rank of AB is also less or equal to rank of B. Okay. So this is the general product result. So agar two matrices are defined, their product is defined, then you can easily say the rank of AB is less or equal to the minimum of rank of A into rank of comma rank of B. Okay, next result लिखते हैं, that is your result number 3. So that is called conditional product result, है ना। अब यहाँ पर कंडीशन को हम ऐड करेंगे और कैसे वो कंडीशन ऐड होती है, लेट अस सी। कंडीशनल प्रोडक्ट रिजल्ट, conditional product result. So if I'm just taking here, let A be a m by n matrix, and this is B,
n by p matrix, then so let A be a m by n matrix and B is another matrix of order n by p. Then you know that AB is defined, and अब हमारे पास रैंक ऑफ दिस ए बी मैट्रिक्स विल बी डिपेंडिंग ऑन द रैंक ऑफ ए एंड बी। ठीक। सो मतलब प्रोडक्ट, अभी तो जनरल प्रोडक्ट था कि हमारे पास रैंक ऑफ ए बी विल बी लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। इफ वी हैव सम रैंक्स लाइक दिस, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ऑर्डर आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एम ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दैट इज योर दिस, and rank matrix order of the matrix B is your n by p matrix. Then rank of AB will be रिवर्स ऑर्डर। अब यहाँ पर कॉमन कॉमन हमारे पास क्या है, n। n का मतलब नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो n इज कॉमन। तो अगर ए और बी में से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक n हो जाती है, इफ ए और बी में से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक n हो जाती है, n का मतलब अगर ए की बात करें तो उसकी रैंक इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और अगर बी की बात करें तो बी का जो रैंक है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके, तो ए और बी में से किसी की भी रैंक अगर n हो जाती है, देन वी कैन इजिली एबल टू से द रैंक ऑफ ए बी। तो अगर मैट्रिक्स ए की रैंक n हो गई, देन डेफिनेटली रैंक ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी। और अगर रैंक ऑफ बी एन हो गई, देन डेफिनेटली रैंक ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ ए। ओके, तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ रैंक ऑफ वी आर गोइंग टू फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, तो दैट विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए if rank of b is just equal to the common number that is your n। ठीक है, तो ए और बी में से किसी की मैट्रिक्स की रैंक अगर n है, तो ए बी की रैंक उसकी अदर मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होगी। तो रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल इफ रैंक ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इफ रैंक ऑफ बी जस्ट इक्वल टू n, एंड रैंक ऑफ बी ए बी की रैंक रैंक ऑफ बी हो जाएगी इफ रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू n। तो दिस इज द कंडीशनल statement you can also write here. So let A be a m by n matrix and this is B be a n by p matrix। इसको आप और करके लिख लीजिए ताकि आपको रिजल्ट याद रहे। मैट्रिक्स, so if rank of any matrix, if rank of any one matrix is n, then rank of AB is equal to black in screen is congested। तो AB is equal to the rank of other matrix। What happening? Is equal to the rank of other matrix। Okay, got it? आइए नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी ऑफ रैंक।
fourth result, that is called Frobenius. Frobenius inequality of rank. So अरे भाई मिट्टू कैसे कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे हमें लगता है. Okay. So Frobenius inequality of rank क्या है? So if I'm just taking a matrix A of order m by n, and this is B n by P, matrices then the rank of A plus rank of B is less or equal to rank of AB plus n. ठीक है. तो it is very important result कि how the define the sum of the two matrices. तो rank of A plus rank of B is always less or equal to rank of A plus rank of B is always less or equal to rank of AB plus rank of plus n number of columns of the matrix. ठीक है. So this is a defined result on the ranks of matrices A and B and their product. So that's called Frobenius inequality of rank. So rank of A plus rank of B is always less or equal to rank of AB plus n. नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं. फिफ्थ नंबर रिजल्ट, दैट इज इफ A and B are n by n matrices, n by n matrices such that A into B is just equal to 0 and A plus B is non-singular, then ध्यान दीजिएगा, if A is and B are the n by n matrices, मतलब A and B are the square matrices such that their product is 0 and their sum is non-singular. ठीक है, मतलब जो sum का determinant है that is non-zero. तो if sum is non-singular and A into B is 0, then we have a very famous result that rank of A plus rank of B will be equal to n. ठीक है. And nullity of, in the behalf of this result we can able to say about nullity. Okay. So on behalf of this result we can able to say about nullity. So rank of A plus rank of B will be equal to n, and nullity of A plus nullity of B will be equal to n.
Okay, so this result we have. So we use the Frobenius inequality and some result we can able to prove this fifth result. तो आइए जरा 6 नंबर लिखते हैं रिजल्ट। ये कहते हैं इफ मैट्रिसेस की टाइप्स हमने पढ़े थे, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस। तो इफ अ मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट, व्हाट इज हैपनिंग हियर? Okay, so if A is a nilpotent matrix of size n, and index of nilpotency is 2. You can say we get this is A square is just equal to null matrix. And we are getting this is A square is just equal to null matrix. Then this rank of A is always less or equal to the greatest integer n by 2. और अगर हमारे पास रैंक ये है तो नलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? एंड दिस नलिटी ऑफ ए is greater or equal to n minus this is your n by 2. So if A is the nilpotent matrix of size n, okay, and index of nilpotency is 2, then definitely the surely the rank of A will be less or equal to greatest integer function n by 2. तो n by 2 जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें जो इंटीजर वैल्यू होगी दैट विल बी द rank of A less or equal to that number, and nullity of A will be greater or equal to n minus, because maximum rank क्या हो सकती है? greatest integer n by 2. तो आपको अगर नल्टी की बात करना है तो नल्टी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू n माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द रैंक, दैट इज योर ग्रेटर इंटीजर n by 2. नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज नंबर 7। नेक्स्ट रिजल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, है ना? अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो जस्ट राइट डाउन ऑल दिस रिजल्ट्स एंड रिवाइज 1 or 2 टाइम एंड देन गो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग, है ना? आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएं और देखेंगे यू कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली, है ना, बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स with me, and let's meet in the next lecture. Thank you so much.